welcome back students. Standard 9th Maths, Chapter 6 Lines and Angles, and this is part 9. So in the previous part, we saw illustration 5 and certain axioms and theorems, correct? And very importantly, we saw true of all statement based on the angle bisectors of different types of pairs of angles formed by transversal of parallel lines. Those are very important, and we even saw the proof, though we didn't write in detail. Okay, so moving ahead, in this session we start with example 6 of the textbook. All right, the statement is, in figure below, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. All right, by one of the theorems, AB, where is AB? Here. AB is parallel to CD, this line, and CD is parallel to EF. Then by theorem, all three lines are parallel to each other. Correct? EA is perpendicular to AB. Where is EA? Here, EA. It is perpendicular to AB. And here is the symbol of perpendicularity. Angle BEF is 55. Where is angle BEF? BEF. Here it is. It is 55. Find the values of X, Y, and Z. Where is X? Here. Where is Y? Here. And where is Z? Here. X, Y, and Z are small letters of English, okay, representing real numbers, and they are the measures of different angles. All right, children. Now, we will take advantage of the figure here, children. All right. And some names, like if you talk about angle X, it is angle B. You will say in short, angle B. This is angle D. You cannot say DB, फिर यहाँ नाम नहीं दिया है. Alright, same way, yeah, this angle you have. Which one? BEF. लेकिन Y का भी पूरा नाम नहीं है. ED नहीं है. तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे. Alright, चलिए. Now, ये 55 और Z, 55 और Y. 55 means angle E or angle D. 55 is angle E or X is angle B. 55 is angle E and Z is, बोलिए बोलिए, एंगल E, लेकिन वो अलग वाला एंगल. ये BEF और ये AEB. क्या कोई रिलेशनशिप है? जस्ट टेल मी चिल्ड्रन, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन 55 एंड Z? यस. क्या ये दोनों एंगल का टोटल ये एंगल है? एम आई राइट? Now this one is right angle, so this one also has to be right angle. क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, so ये एंगल और ये पूरा एंगल, they are interior angles on the same side of transversal, so they are supplementary. So that's how you can get Z. ये टोटल 90 है, so 55 plus Z is equal to 90. Same way, ये पैरेलल लाइन है, ये दो CD और EF, they are parallel, और ये एंगल they are interior angles. 55 और Y, they are interior angles on the same side of transversal, so they are also supplementary. So Y plus 50 is equal to 55 is equal to 180. So that's how you are going to get Y. And once you get Y, ये दो parallel line, ये transversal, so ये एंगल और ये एंगल, look, parallel lines, transversal, ये और ये, they are corresponding angles, so they are equal, children. Correct? They are equal. So Y मिल गया तो ये भी मिल गया. Correct? I think I should start with this. Okay? चलो. So how I write? DE. See, DE is transversal. I'm using short form. Okay, transversal of CD parallel to EF, CD parallel to EF. Therefore, angle D
शॉर्ट में, प्लस एंगल ई, यहां पूरा नाम BEF, एंगल BEF इज इक्वल टू 180. You might say, so why you wrote full? You should write E only. But E is other angle as well. AEB को भी E कहते हैं, BEF को भी E कहते हैं. So there are two small. सिर्फ E लिखोगे तो दो एंगल, तो कौन सा एंगल? तो इसलिए we are writing in full form. Now what is angle D? Y plus angle BEF 55 is equal to 180. Children, this is how you have to write. Okay. Therefore, y is equal to 180 minus 55. Therefore, y is equal to, if you subtract, what you are going to get? 125. So you got y. एक टारगेट पूरा हुआ. करेक्ट. नाउ लेट्स सी द अदर वन. ओ ये ले लेते हैं, y इक्वल टू x है, तो यू कैन से BD. ये BD is transversal of CD parallel to AB. BD is a transversal of AB parallel to CD. AB parallel to CD. Therefore, y equal to x या x is equal to y by theorem. Corresponding angles are equal, वो axiom है, by axiom. करेक्ट. ये by theorem. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, वो बाय थ्योरम है. राइट. इसको 1 कह दो. देयरफॉर x इज इक्वल टू, व्हाट इज y? 125. मिल गया x. एंड दिस इज 2 by 1. ठीक है चिल्ड्रन, डिड यू गेट मी? चलिए नाउ द नेक्स्ट वन. एंगल BAE और एंगल AEF, they are interior on the same side of transversal. तो कौन सा ट्रांसवर्सल है? AE. AE is a transversal of AB parallel to EF. Because AB parallel to EF is not given. Why? Because AB is parallel to CD and CD is parallel to EF by data. Correct? Therefore, ये एंगल A, पूरा नाम लिखेंगे EAB, एंगल EAB प्लस एंगल AEF, एंगल AEF is equal to 180 by theorem. Okay, I'm writing short form THL. Therefore, EAB is 90 प्लस है तो मुझे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. AEF, बी केयरफुल, ये पूरा एंगल है, ये दो इंटीरियर, ये पूरा एंगल, दैट इज Z plus 55. Z plus 55. आई शुड बी राइटिंग इन द ब्रैकेट, बट कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने ब्रैकेट निकाल दिया. ये एंगल का मेजर 90, ये एंगल का मेजर व्हाट यू रिटन इन द ब्रैकेट, आगे इक्वल टू और आगे 180. देयरफॉर 90 plus 55, so that is 145, or plus Z is equal to 180. Therefore, Z, small z, is 180 minus 145. Therefore, Z is equal to kitna? 35. So you got Z as well. So you have achieved X, Y and Z. I hope that is clear to you children. Clear? So that was illustration. So that's the end of illustrations before exercise 6.2. So now we begin with exercise 6.2. All right. In figure given below, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. Hey children, find the value of x and y. X ये angle, y ये angle. They are alternate interior angles. If they are equal, then these lines are parallel. If alternate okay, ये एंगल की बात कर रहे जो x है, ये एंगल की बात कर रहे वो y है. You can see they are in the interior and on the alternate side of transversal. So if alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. Correct? That is one of the theorem that we had seen. Okay. तो x की वैल्यू ढूंढेंगे, y की वैल्यू ढूंढेंगे. If they are equal, then these two lines are parallel.
first target is to find the value of x and y. Okay. Now, if you look at the figure, yes, ये तो शो करना है, पैरेलल दिया नहीं है, इट्स नॉट पैरेलल, ऑलराइट, दिया नहीं है, यू हैव टू प्रूव इट. ओके, एक्स और ये दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. व्हाई? दिस इज द रे standing on green line, so the two adjacent angles are 180. Correct? That is axiom 1, right? Okay, so straight away 50 plus x is equal to 180 by axiom 6.1. Alright, ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है. If you are knowing it, you write. Children, क्योंकि यहां नाम नहीं दिया है, देखो, आई कैन नॉट नेम द एंगल. करेक्ट? ये भी पॉइंट का नाम नहीं दिया है. वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग द पॉइंट्स आर नॉट गिवन, सो वी शैल राइट डायरेक्टली. एक्चुअली वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट. कुछ कम लिखना पड़ेगा, एंड दैट्स गुड फॉर अस. करेक्ट? ओके. Therefore x is equal to 180 minus 50. Therefore x is equal to 130. बाबा, x की वैल्यू मिल गई, that is 1. All right, prepared for the next now. Oh children, now ये देखो, the two lines are intersecting and they are vertically opposite. उसमें parallel हो ना हो कोई जरूरत नहीं है. Vertically opposite angles are always equal, and that is the first theorem that we proved, 6.1. Okay, चलो. Also 130 is equal to y. We'll say by theorem. By theorem, number लिखो मत लिखो, don't worry. i.e. y is equal to 130. Children, you got value of y. This is result 2. Now देख लो, x is 130, y is 30. 130. So by 1 and 2, it follows that x is equal to y. करेक्ट? ये और ये इक्वल, i.e. alternate interior angles, i.e. pair of alternate interior angles is equal. Therefore AB is parallel to CD. Proved by theorem. वो भी theorem ही है, statement. Correct? I hope you have understood, children. So that was example 1 of exercise 6.2. Let's proceed further. Number 2. All right. That's the second one. Correct? Okay. In figure given below, AB, this line, is parallel to CD, this line. And CD, this line, is parallel to EF, this line. That means they are all parallel to each other. Let me write that first. AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Let me say 1 by data. Therefore, what you can say? That AB is parallel to EF. Therefore, AB is parallel to EF. Result 2 by theorem. We have proved that, children. वो theorem हमने prove किया है. All right? चलिए, ये पैरेलल है. y is to z is equal to 3 is to 7. एक और कंडीशन है भाई, जब भी रेशियो हो y is to z, y and z are small letters representing real numbers, is 3 is to 7 by data. आप सपोजिशन कर ही लो, let y is equal to 3k, then z will be 7k. Call it result number 3. Is that clear to you, children? Okay. अब आपको find out the value of x. Only x has to be found. So how will you find, children? You have to find x. So how will you find? कैसे find करेंगे? बोलिए. Yeah, one thing. x plus y is equal to 180. वो इक्वेशन आएगा. करेक्ट? लेकिन मेरे पास y की वैल्यू है और z की वैल्यू है.
I've got value of y and z, so I should work on that first so that I can substitute the values of y and z in terms of k, and then I can get the value of k, that it will be a linear equation in k, correct? Okay, chalo. Now is there any relationship between y and z? Okay, क्या रिलेशन है y और z के बीच? कोई भी नहीं, अभी तो कोई भी नहीं. Do you understand? But you can say this is also z. Reason vertically opposite angle. ये एंगल का मेजर z, then this is also z. अभी ये दो parallel lines, these two parallel lines, green line is transversal. ये exterior, ये exterior. So both are exterior angles and they are supplementary. Do you understand? So कहेंगे, all right? कोई नाम ही नहीं दिया है children. So you have to write straight away children. नाम नहीं दिया तो हम क्या लिखे? We are not going to give names. All right? So straight away y plus z is equal to 180. All right? Reason लिखेंगे exterior angle on same side of transversal. Or you may just write by theorem. Actually for exterior angle there is no theorem that we have proved. So ऐसे लिख देते हैं. All right? Okay? But now as we know, what is y? 3k plus what is z? 7k is equal to 180 as expected. Linear equation 3k plus 7k is 10k, that is equal to 180. Therefore, yes, k is equal to 180 divided by 10, 0 0 cancel, so k is equal to 18. This is result number 4. ये k की वैल्यू आपने डाली 3 से, so here you may write by 3. Clear to you children? The target is not yet over. Now x plus y is equal to 180. Now x plus y is equal to 180. By theorem, वो theorem है interior angles on the same side of transversal are supplementary. Okay, और y क्या है देख लो, y क्या है 3k. So x plus 3k is equal to 180 by 3, और k क्या है 18. So therefore x plus 3 into k, that is 18, is equal to 180. ये k की वैल्यू कहां से आई? By 4. Therefore x plus 18 3s are 54 is equal to 180. Therefore x is equal to 180 में से 54 minus करो, so 126. So here you got the value of x. X is 126. So I hope you all have understood children. Done. Moving on to the third sum of exercise 6.2. All right, let's see. In figure given below, AB is parallel to CD. AB, it's B here, and CD. यहाँ सब नाम दिए हैं. EF is perpendicular to CD. EF, ये, it is perpendicular to CD. Here it is. Angle GED is 126. GED, ये पूरा, that is 126. Find angle AGE. AGE, ये ढूंढना है. उसको मैं x कह ही दूं. Let me call it x. GEF. GEF. This angle. Let me call it y. This is y. And angle FGE. FGE. Let me call small z. All right. पहले ये लिख ही देता हूं. Let angle AGE, angle GEF, and angle FGE is equal to, इसको हमने x कहा, इसको हमने y कहा, और लास्ट वन को हमने z कहा. कॉल इट रिजल्ट नंबर 1. ऑलराइट. और जो दिया है 126 दिया है, एंगल GED is equal to 126. Result 2 by data. By data. So whenever we want we can use it. Alright. और कुछ डेटा में है. AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Result 3 by data. Alright. चलिए. Now
इफ यू वांट विच रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप आपको मिलेगा चिल्ड्रन? ऑल राइट, ओके चिल्ड्रन, ये पूरा एंगल GED has two parts, GEF or DEF. So measure of this two part 1 और ये part 2 is equal to whole angle. Correct? Okay, so I'll start with that. Why this part plus this part is equal to this? Because ray EF lies between EG and ED. So ray EF lies between rays EG and ED. EG and ED. यह सब नाम दिए हैं. So we will have to write nicely. Therefore, angle GEF plus angle DEF is equal to angle GED. All right. Therefore, now GEF we have called it Y from 1. Then angle DEF वो perpendicular है by data, correct? That is 90 is equal to, और GED वो भी by data 126. So you can say by 1 comma data, by 1 and data. Is that clear? Oh, interesting. It's a linear equation in variable y. So we got y is equal to 126 minus 90. Therefore, y is equal to 36. IE. अब ये y मतलब ये एंगल GEF is equal to 36 degree. So एक टारगेट अचीव कर दिया GEF वाला. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट टारगेट. अब आपको y की वैल्यू मिल गई, मैं यहां लिख देता हूं 36. ऑलराइट, ओके चिल्ड्रन, ये तो मिल गया. ये एंगल और ये एंगल, यू सी दे आर इंटीरियर एंड ऑल द ऑल्टरनेट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. वो तो पहले ही लिख देना चाहिए था. करेक्ट. एंड ऑल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल. ट्रांसवर्सल कौन सा है चिल्ड्रन? दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो लिखता हूं GE. Here everything is named in the figure, so we have to write everything. GE is a transversal of AB parallel to CD. AB parallel to CD. Therefore, angle AGE is equal to angle GED. Angle GED. Okay? By theorem, alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर AGE को हमने x कह दिया, कोई बात नहीं, और GED 126 है. सो अगेन 126 बाय, ये x कहां से आया? बाय 1. 126 कहां से आया? इट्स इन द डेटा. सो बाय 1 एंड डेटा. अरे IE x की जगह पे लिख दो एंगल AGE, that is 126. So second target AGE is also achieved. All right. Now finally I have to find Z. Ray X or Z, they are forming linear pair. Ray GE stands on line AGF. I've used the word line, so no symbol. Therefore, angle AGE plus angle EGF, या FGE बोलो, FGE, क्योंकि यहां FGE नेम किया है. इट्स वन एंड द सेम. FGE is equal to 180. करेक्ट. बाय एक्सियोम, ये पहला एक्सियोम था. चिल्ड्रन, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सियोम है कि थियरम है. Not writing the number is okay, but whether you are using axiom or theorem, that you will have to write. Therefore, now AGE is X, correct, plus FGE is Z,
that is equal to 180. आगे equal to और 180. Now x is 126. So 126 plus z is equal to 180. This implies z is equal to 180 minus 126 and that is 54. 54 i.e. what is z? Angle FGE, that is 54. So your third target is also achieved. I hope you understood it well. Okay, sure, good. Right, so moving on to the next sum. It's number 4. In figure below, PQ is parallel to ST. PQ, here it is. ST, here it is. Children, ये तो ray है, but you can imagine it as line. Okay, so the two lines PQ and ST are parallel. Angle PQR, this one is 110. Angle RST, this one is 130. Find angle QRS. Hey children, QRS, ये इसको मैं कह देता हूं X. Now what to do? क्या करे? बोलो. This is going to be slightly tougher. Here some construction is required. And what is that? अभी children, ये दो लाइन, आप सर्पेंटाइन लाइन कभी भी मत ड्रॉ करना. दिस इज सर्पेंटाइन लाइन. मैंने ऐसे सांप जैसे जाता है, सरपंट. सरपंट मतलब स्नेक, ने सर्पेंटाइन मतलब स्नेक जैसा पाथ. ऑलराइट, सो उसको सर्पेंटाइन लाइन बोलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं ड्रॉ करना, जस्ट टू एक्सप्लेन. तो ये दो सर्पेंटाइन एक दूसरे को पैरेलल है. तो व्हाट आई डू, ये लाइन PQ के बाहर एक पॉइंट है R. सो थ्रू दैट पॉइंट I draw a line L parallel to PQ. Line L मैंने parallel to PQ draw किया है. Is that clear? Just please try to understand. Let's say it is line AB. हम नाम देते हैं line AB क्योंकि हमने draw किया. Draw किया तो हम नाम दे सकते हैं. जो फिगर है उसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं, ड्रॉइंग नहीं, then it will remain the same. So I'll start with that. Let line AB be parallel to line PQ, but PQ is parallel to ST. Therefore, AB is parallel to ST as well. Therefore, AB is parallel to ST by theorem. Okay, ये तीनों को साथ में मैं one बोल देता हूं. So all three are parallel to each other. Children, मुझे ये एंगल ढूंढना है. बट नाउ राइट नाउ आई गॉट दिस टू पैरेलल लाइंस और ये ग्रीन वाला ट्रांसवर्सल. सो ये एंगल और ये एंगल दे आर इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ओके, इसको मैं बोल दूं A. ऑलराइट, लेट एंगल ARQ, let angle ARQ is equal to A. Alright, let me say it too. Now QR 110 plus A is equal to 180. In alternate interior angles on the same side of transversal. क्यों? Because QR is a transversal of PQ parallel to AB. PQ parallel to AB. Here PQ is parallel to AB as well. Alright, here PQ is parallel to AB. Therefore, angle PAR plus angle PQR, it is not A, PQR or angle ARQ is equal to 180. Interior angles on the same side of transversal are supplementary, that is theorem. So by theorem, now PQR is 110 by data और ये A by result 2 is equal to 180 by data and 1 by data, sorry, not 1, 2. Alright, so you got the value of A. Therefore, A is equal to 180 minus 110. So that comes to 70. Call it result number 3. Children, अभी तो A मिला, उसी तरह इस एंगल को मैं B कहूंगा. And I can get B very easily. These two are parallel.
this is transversal, so this angle are interior angles on the same side of transversal. So 130 plus b is equal to 180. So that is going to give me b. It is going to fetch b for me. Alright, so I'll write. कौन सा है transversal? RS is a transversal of ST parallel to AB. ST parallel to line AB है ये. Therefore, angle TSR plus angle BRS is equal to 180. Alright, यहां एक चीज हम भूल गए. Let angle BRS is equal to B and call it result 4. 3 तक था. Now you can take TSR, वो 130 है by data. Therefore, BRS उसको हमने बताया B, that is equal to 180. So by data, और हमने जो बताया वो रिजल्ट 4 है जहां से B मिला. Therefore, B is equal to 180 minus 130, so that is 50. Call it result number O. Children, हमारा ये एंगल एक्स क्यू आर एस तो अभी आया ही नहीं. अभी देखो a प्लस एक्स प्लस बी, a प्लस एक्स प्लस बी, ये तीनों का टोटल कितना होगा? 180. क्यों? लीनियर ट्रिपलेट. वन एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, तीनों मिलकर लीनियर बनाते हैं. ऑलराइट, क्यों लीनियर? बिकॉज दिस रे एंड दिस रे स्टैंड ऑन लाइन ए आर बी. सो लिख लेंगे रेज आर क्यू एंड आर एस स्टैंड, दो है सो एस नहीं, ऑन लाइन ए आर बी. Therefore, तीनों एंगल का टोटल ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, उसको एक्स कहना हो तो कहो, ना कहो तो भी चलेगा, प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180. लीनियर ट्रिपलेट ऐसे लिखो, लीनियर ट्रिपलेट. ऑलराइट, देयरफॉर बोलिए व्हाट इज ए आर क्यू? दैट इज ए प्लस QRS, that is X, and this is B, is equal to 180. So therefore, आगे बढ़ते हैं. Therefore, A क्या है? 70, रिजल्ट 3 से, प्लस X प्लस B क्या है? 50, is equal to 180. A की जगह पे 70, X की जगह पे X, B की जगह पे 50, आगे इक्वल टू 80. राइट, दिस इज बाय 3 and 4, by 3 and 4. Therefore, children, 70 plus 50, 120 plus X is equal to 180, which implies X is equal to, ये 120 वो बाजू ले जाओ तो 180 minus 120 and that is 60. i.e. that X is what? Angle QRS. Angle QRS is equal to 60 degree. Finished. Got it, children? Did you understand? Sure. So let's move on to the next one, and that is number 5 of exercise 6.2. Here it is. Let's see the statement. In figure given below, AB is parallel to CD. Angle APQ ये वाला, that is 50. Angle PRD, this one, 127. Find X and Y. X यहां है, Y यहां. ए चिल्ड्रन, X तो मिल गया. क्यों? ये दो पैरेलल, PQ ट्रांसवर्सल, 50 ट्रांसवर्सल के ये बाजू, X ट्रांसवर्सल के ये बाजू, इंटीरियर, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर इक्वल, सो 50 इक्वल टू X. ठीक है, ओके. फिर ये Y, हाउ विल यू फाइंड Y? चिल्ड्रन, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग Y. लेकिन हम ये कह सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल बदल गया PR, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दे आर ऑल्सो इक्वल. एंगल APR एंड एंगल PRD, द टोटल, सो दे आर इक्वल. ओके, सो पहले X मिल जाए फिर उसको भी ढूंढ लेते हैं. चलिए, प्लीज फिगर ड्रॉ किया ना तो वो डिटेल्स नहीं लिखेंगे, फिगर में सब है. ओके,
So I'll start with this. PQ is a transversal of AB parallel to CD. Therefore, angle APQ is equal to angle PQR. Angle PQR. Alternate interior angles are equal by theorem. Correct? Therefore, what is angle APQ? Angle APQ ये है, that is 50, और angle PQR that is X. Okay? By data, हम by data कह देंगे, फिगर में है ही, i.e. x is equal to 50. So एक वैल्यू तो हमने पा ली, x की वैल्यू तो हमको मिल गई, that is 50. Clear to you? चलो, we move to the next one. अब ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ट्रांसवर्सल बदल गया, इट्स PR. सो लिखते हैं PR इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ AB पैरेलल टू CD. दैट इज बाय डेटा, डेटा में ही है. करेक्ट? यहां भी लिख सकते हैं बाय डेटा. ऑलराइट? देयरफॉर एंगल APR is equal to angle PRD. Angle PRD. Now APR has two part 1 और part 2, दोनों का टोटल. सो 50 प्लस y is equal to, ये एक ही पार्ट में है, 127. अगेन बाय डेटा. Therefore y is equal to 127 minus 50, and therefore y is equal to 77. So you got the value of y as well. Children, I hope you have understood it well. Okay? So see you in the next session. Till then, goodbye.